मौका मिले। हम यदि बात करते हैं मेरी जर्नी की कि कैसे जब भी कभी हमें कोई काम करना पड़ता है या आगे बढ़ना हो तो हमें जो भी रास्ता मिलता है, जो भी पाथ मिलता है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। वी शुड एम्ब्रेस वॉट एवर जर्नी वी हैव। आई एम पार्ट ऑफ इसरो and Dr. Vikram Sarabhai is the father of Indian space program, and he said that ISRO should thrive in spite of people telling that why an advanced country should work in a field like space technology. But we have to see that if we are amongst the international community, we should be second to none in application of modern technology for the benefit of common man in society. यानी जन साधारण के लिए कोई भी ऐसी योजना जिसके कारण जन साधारण का विकास हो, उसको लागू करने के लिए हमें कभी भी पीछे नहीं होना है। यदि हम बात कर I will say next, then only you please go to the next. यदि हम इसरो के अकम्प्लिशमेंट की बात करें तो हमारे 99 लॉन्च मिशन हुए हैं। उसके बाद 125 स्पेसक्राफ्ट यानी उपग्रह हमने स्पेस में भेजे हैं। 15 जो है स्टूडेंट्स आपके जैसे ही विद्यार्थियों ने सैटेलाइट्स बनाए जिन्हें हमने स्पेस में भेजा है, और 432 फॉरेन यानी विदेशी उपग्रहों को हमने हमारे लॉन्च व्हीकल के द्वारा जो है वो लॉन्च किया है। और इसके अलावा कई सारे काम हैं जो इसरो के विभिन्न केंद्र जो 19 जगहों पर फैले हुए 40 केंद्र हैं, उसमें सैटेलाइट बनाने से लेकर उसको लॉन्च करने से, उसको कंट्रोल करने से, उससे उपग्रह से डाटा प्राप्त करने तक का कार्य जो है सभी केंद्रों में किया जाता है। नेक्स्ट। सो यदि हम बात करें सबसे पहले लॉन्च व्हीकल की, तो शुरुआत हुई थी SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 की, जो कि केवल 40 किलोग्राम वजन का उपग्रह स्पेस में या अंतरिक्ष में जिसके द्वारा हम भेज सकते थे। एंड नाउ द सिचुएशन हैज कम व्हेन वी कैन सेंड अ सैटेलाइट ऑफ 4000 kg। जस्ट इमेजिन द जर्नी फ्रॉम 40 kg टू 4000 kg वी हैव डन, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट GSL विद a human rated launch vehicle यानी जिसका नाम है गगनयान। आप सबने सुना होगा, गगनयान के द्वारा पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपने स्वयं के यान द्वारा हम अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। सो दिस इज द जर्नी ऑफ लॉन्च व्हीकल्स इन इंडिया। नेक्स्ट। दूसरी यदि हम बात करें तो हमने जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, जो कि मेरा फील्ड है, उसमें भी हमने बहुत डेवलपमेंट देखे हैं। हमने जब शुरुआत की थी तो पेपर के नक्शे हुआ करते थे, जैसे आप फोटोग्राफ्स देखते हैं ना, प्रिंट। अब तो फोटोग्राफ्स के हम प्रिंट भी नहीं लेते, वी ऑल सी डिजिटल इमेजेस, डिजिटल फोटोग्राफ्स। बट व्हेन वी स्टार्टेड अवर जर्नी, यू कैन सी दैट आई एम होल्डिंग ए फोटोग्राफ एंड एक्सप्लेनिंग टू द पीपल व्हाट आर देयर इन दैट पर्टिकुलर इमेज और फोटोग्राफ। सो दैट वाज द जर्नी वी स्टार्टेड, जब हम गांव-गांव में जाकर लोगों को ये समझाते थे कि उपग्रह का डाटा या उपग्रह से जो इमेज मिलते हैं उसको कैसे एनालिसिस करके आपके लिए उसमें हम काम कर सकते हैं। ये जो अभी आप देखेंगे ना लेफ्ट में जो सैटेलाइट घूम रहा है, इसको हम सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहते हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल का पूरे अर्थ का चक्कर लगाता है और पृथ्वी के पिक्चर्स लेता है। मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पूरी जर्नी थी जब हम फील्ड में जाते थे, अभी भी जाते हैं, लोगों को समझाते थे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। और आज ये जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है, आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की टेक्नोलॉजी वर्तमान में ये हो गई है। सो इट हैज कम फ्रॉम ग्रास रूट लेवल to $1 ट्रिलियन economy, and that is the journey we have seen during last 36 years when I was working in ISRO. Next. So the journey, how it changed. We had initially the satellite with a resolution of 56 meters. You can see on the left entire Hyderabad and surrounding can be seen like that. Then we came to 23 meter resolution. आप सबको पता है ना, कैमरे में जैसे अलग अलग resolution होते हैं, वैसे ही उपग्रह में जो कैमरे होते हैं उनके अलग अलग resolution होते हैं. So then we came to 23 meter, things became more clear. Then 5.8 meter. आप देखते हैं वो जो लेक है वो कौन सी लेक है? हुसैन सागर लेक. So
कितने क्लियर होते जा रही है. Then we come to 2.5 meter, and if you see 1 meter, even in the garden in the Hussain Sagar, you can count each and every tree. What kind of trees are there, that also you can identify. And now we are at 0.3 meters, less than 1 meter, better than 1 meter. Now these two pictures, how they change when the season change. Now here you can see one picture which is taken in the month of May, and the same area taken in the month of October, and this particular place is known as Mansarovar Lake. आप सबने सुना होगा ना मानसरोवर लेक के बारे में. So one lake is called Mansarovar and the left side is called Rakshas Tal. So during winter it is all frozen. So that's why you can see that white color, which is because of snow. This particular picture here, which is a video which is running, it is for the Kedarnath disaster pre and post image. Before disaster how it looked, and after disaster what are the damage which has taken place. Next. So now you can see here where we are sitting now, Rashtrapati Nilayam. Now the same area you can see here where we are, which are the lawns of Rashtrapati Nilayam, the main building of the Rashtrapati Nilayam, and all even the individual trees you can count on the satellite data how many trees are there in the Rashtrapati Nilayam. You can take that as an exercise after going there. Go to Bhuvan, and you can see this data is downloaded from Bhuvan. You can search on Google Bhuvan, and then you can see, and you can really do that exercise, and you'll be happy to know the place where you've gone, how it looks on the satellite image. Next. How the next thing is in anyone's journey is adopt to changes. Changes are inevitable. हर एक के लाइफ में चेंजेस तो आएंगे ही, तो हमें उन चेंजेस को देखते हुए उसको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है. ये हैदराबाद और सराउंडिंग का एक पिक्चर है. दिस इज फ्रॉम 1970 और ये पिक्चर है 2022 का. यदि आप देखेंगे इसमें कुछ, आई जस्ट पॉइंट आउट 1 or 2. ये पर्टिकुलर वाटर बॉडी जो सर्कल में है वो आपको दिख रही है. ऊपर एक एयरपोर्ट है वो आपको दिख रहा है. नीचे एक वाटर बॉडी है वो इस गोले में नजर आ रही है. लेकिन वाटर बॉडी के बाजू में जो एग्रीकल्चर एरिया थी वो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वो सब गायब हो गई है और वहां पर सारे सेटलमेंट आ गए हैं. तो दीज आर द चेंजेस. नाउ सम आर पॉजिटिव, सम आर नेगेटिव. जब आप एग्रीकल्चर एरिया कम करते हैं, आप किसी भी वाटर बॉडी का जो कमांड एरिया या कैचमेंट एरिया है उसको आप अफेक्ट करते हैं, सो इट गेट्स अफेक्टेड योर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. So like that, these are some changes which are positive and negative. You have to study them and you have to act accordingly. Next. So हम तकनीक कौन सी यूज करते हैं इसमें, उसे कहते हैं हम सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग. What is remote sensing? When you see from a distance about what, about any object, about any area or about any phenomena, किसी भी स्थान, वस्तु या घटना के बारे में यदि आप दूर से जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे हम सुदूर संवेदन कहते हैं. छोटा सा एग्जाम्पल है, यदि मैं कहूँ कि वो जो पीछे खड़े हैं उन्होंने पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है, तो मेरी आंखें भी सुदूर संवेदन का कार्य कर रही हैं. हम किसी आग लग रही हो यदि कहीं पर, तो हमको जाके उसको छूना नहीं पड़ता है, हमको दूर से ही पता चल जाता है कि वहां पर आग लगी हुई है. तो हम इसमें क्या करते हैं, सूरज से किरणें निकलती हैं, वो वातावरण से होते हुए पृथ्वी पर टकराती है. पृथ्वी पर टकराने के बाद वी ऑल नो एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी destroyed. It can be only converted from one form to another. So incident energy goes back as a reflected energy. Some energy is absorbed, some energy is transmitted. जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है वो सैटेलाइट में जो कैमरा होते हैं उसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है और पृथ्वी पर एंटीना के द्वारा उसको रिकॉर्ड किया जाता है. सो इसको हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं. नेक्स्ट. तो रिमोट सेंसिंग के बहुत सारे फायदा होते हैं. जो सैटेलाइट से या उपग्रह से जो पिक्चर मिलते हैं उसे आप कई चीज़ों के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं. जैसे आप उसके द्वारा किसी स्थान का भू उपयोग या भू आवरण पता लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी पता लगा सकते हैं, आप वाटर के बारे में, स्नो के बारे में, जियोलॉजी के बारे में, माइनिंग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आप जो है वन की स्थिति के बारे में, जल ओशंस के बारे में, इन सब के बारे में सुदूर संवेदन का उपयोग आप कर सकते हैं.
नेक्स्ट। तो अब मेरी जर्नी की यदि बात करें तो मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला जब मैं हाईटेक एक्सपर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट बन के मैं मॉरिशस गई। मॉरिशस, यू नो, इट्स a small country, 60 by 45 kilometer maybe of the size, which is very small, but it is having varied topography, यानी वहाँ पर उसमें सी बीचेस भी हैं, पहाड़ भी हैं, वहाँ पर अलग अलग टाइप के सॉइल्स भी हैं, कॉफी प्लांटेशन भी है, टी प्लांटेशन भी है, शुगर केन भी है, सो सब चीज है। सो ऐसे वेरिड कंट्री के लिए वहाँ का डाटाबेस बनाना, सैटेलाइट बेस, और उनको लोगों को ये बताना कि सुदूर संवेदन की तकनीक के द्वारा कैसे आपके कंट्री का फायदा हो सकता है, दैट टास्क वाज माइन एंड आई कुड डू इट। फिर मैंने एक उसको पूरा के पूरा एक ओपन सेरेमनी में उसको लॉन्च किया, विच वाज क्वाइट अप्रिशिएटेड। सो I learned many things out of that particular my experience. So we should always have some experience of working in new technology and in new areas. Next. So अब यदि हम बात करते हैं, चूंकि आज का विषय है, आज हम बैठे हुए हैं वुमेन्स डे के लिए, तो हर बच्ची का या हर फीमेल का ये एक अधिकार है कि उसे जन्मने दिया जाए। She has a right to birth. ऐसा नहीं होना चाहिए, the sun rose, a cock was heard, the leaves rustled out through a bird. A pleasant morning, but the house is filled with dismay. The reason a girl was born that day. ऐसा किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। लड़की जो होती है वो लक्ष्मी का प्रतीक होती है। हम जब आज हमने देखा कि हमने नव दुर्गा का जब हमने यहाँ पर सम्मान किया, नव दुर्गा हमने देखी कि कैसे वो देवियां हैं, तो जब हमारे घर में लड़की यदि आती है तो उसका भी सम्मान वैसे ही जरूरी है। यदि दूसरी हम यदि बात करें एक्सेलरेट एक्शन के लिए, यानी जो पहला है, दे शुड बी अलाउड टू गेट बर्थ। सेकेंड इज दे शुड बी गिवन गुड एजुकेशन। गर्ल्स के एजुकेशन में, दिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज, बट इफ यू गो टू रूरल एरियाज, देयर आर 6 मेजर प्रॉब्लम्स। वन इज द पॉवर्टी, जिसके कारण घर में केवल लड़कों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लड़कियों को नहीं। स्कूल बहुत दूर होते हैं, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। समटाइम्स a small problem like lack of safe and private girls only toilets, that also is a major problem in rural areas. Then violence these children they face at home, at other places. Early child marriage and early pregnancy is a big no-no for girls' education, and long distance to school. So these are the few problems which we have to tackle if we have to come accelerate action about education to a girl child. Next. But education, I should tell you, it is a lifelong learning. आपने कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने स्कूल कर लिया है या मैंने कॉलेज कर लिया है, बस अब मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, यदि आपको लोगों के साथ मिलकर चलना है, एंड इफ यू वांट टू बी अहेड ऑफ एवरीवन, education or learning never stops. You may stop taking a formal education, but learning is a day-to-day thing. You can learn from many people. You can learn from the watchman who is there in your society. You can learn from a conductor in which bus you are traveling. You can learn from anyone. Your role model need not be someone very big person like Rashtrapati or Pradhan Mantri. No, not needed. A person next to you, a auntie next to you, a scientist next to you, an officer next to you, or anyone next to you can become your role model. The need is to observe them, what good thing they are going to provide you. Okay, this is my journey, since I am talking about my journey also. So 2016 I completed in job my PhD. That was a big challenge because I had a 9 to 5:30, 7 o'clock job and the family and everything. But I took it as a challenge and I completed my PhD. Next. Then you should never be afraid of taking challenges. This is for everyone. I took challenge. I became part of 35th Indian scientific expedition to Antarctica. आप सबको पता है ना, Antarctica is an icy continent in the southern portion of our globe.
okay, where the temperature is always minus degree, sometimes it goes to minus 20, minus 30, no habitation, permanent habitation, only few scientific community people are living there. So I also got an opportunity from my department to go there, do certain experiment. So I took the challenge. It is a harshness of life. We have to do lot of field work. That was my major task, to do the field work. This is, we arranged the survey on sea ice, you know. There is an ocean surface, on top of that 2-meter ice is there, on top of that snow is there, on top of that we are there, and always whenever I was surveying, I used to feel, what if the ice breaks? Then I felt, what if is nothing? If the ice breaks, I will not be there to think. So enjoy whatever time I have. And then I learned lot of things, that planning is very important whenever you go for any expedition or any kind of work. Without planning, you should never enter. You have to pay attention. Whenever in your class or in any training program, if someone is telling you, some seniors are telling you something, please be attentive. It can save your life in a harsh environment. My colleague learned in a very bitter way. He was about to die because he did not pay attention when the training was going on at Goa. But luckily he survived. If I would have been on that position, because of my age of 50 plus, not much agility, probably I would have died. But since he was 24, I think, and an athlete, so he could jump out. So paying attention is very, very necessary when someone is telling you something. You have to be bold, you have to be vigilant, and you should know your limits. It is not that if you have a capability to do a running of 2 kilometers, you can go for 2.5 kilometers by little bit stretching. But suddenly don't aim for 5 kilometers because that is not for you. You should know your limits. When one day lot of physical activity was going on, some pool was to be constructed, I knew I can't jump down there. I will go down, but how will I come up? So I felt this is not my cup of tea. Then how should I support the people? I went into the kitchen, made something, made hot tea, made other things which I am good at, and then I helped them. So when all the people, after completing their task, when they came, they got something nice to eat. Everyone appreciated that because they understood that physically I may not be helpful to them, rather I will be hindrance. मेरे कारण उनको परेशानी होगी यदि मुझे कुछ चोट लग गई तो. But whatever I could do, I helped them. So know your limits and work around it. That's what is very necessary. Next. So new challenges. I just like to tell all of you, we have one campus that is called GD Metla Outreach Facility. This is a center of National Remote Sensing Center. I was given the task of building that center way back in 2017, and then that center now is totally functional, operational. You can see lot of satellite data, lot of launch vehicles, big models and everything. So I took that as a challenge. We got this bus that time which moves to different places, showing all the ISRO satellites and launch vehicles, and we could integrate lot of colleges, schools, academia. So whosoever is interested, your school or this thing, you can always talk to these people and you can visit them. So this was a new challenge I took, and that really helped me a lot by interacting with the students, colleges and other community in spreading the technology. Next. So apart from this, you should always be technically competent. In whatever field you are, you have to be technically competent. Otherwise, you cannot survive in the male-dominated world. So, if you have to be at par with all, you have to be technically very, very competent. You should be strong enough to project yourself. Then you will get everything, whatever you deserve. But never play that card. मैं तो लड़की हूँ, मैं तो ये कर नहीं सकती. Never. By that, you will degrade yourself in the eyes of others. Okay. Next. So, one motto is there in my life: nothing is impossible. When we were going to Antarctica, there was a physical training camp at Oli and Badrinath. It required lot of physical activity, daily walking kilometers,
taking big rucksack in shoulder and then walking, climbing the rocks and then rappelling from the rock, which I had never done in my life, but I tried and I could do it, although I was feeling very much scared. But I could do it. And trekking, tent pitching, and working on ice and all. The center picture, what you are seeing, I hope you are able to identify the difference between these two pics of me in red sari and me in orange sari. This was when one was when I was 70 kg and next one is when I was 62 kg. So this, I took it as a challenge, and particularly in Antarctica, because there was a time when every person's weight was taken, their luggage weight was taken, and finally since my weight was 70 kg, I was given only 5 kg of the clothes to carry, and remaining suitcase was kept, telling that your weight is more. So I took it as a challenge that next time if I come to Antarctica, I will come with 60 kg weight so that I can carry 10 kg of my clothes to other station. And then recently I took up a challenge to do a 5-kilometer run, and I could complete it. Although now I know after this I won't be able to do, because my doctor advised not to go for any running. That is a different issue. Next. So nothing is impossible if you want to achieve it. Then the next part, very, very necessary in your life, is that you have to be creative. Because if you are creative, do something, if you have some hobby, you will always feel motivated. Whatever may be the situation, how bad your day might be, but if you have a hobby, you will always be motivated. The next day will start as a new day. I have many hobbies. One of them I call as a plate art. It means what I do, I take peels of vegetables, peels of fruits, and some grains and other things, and I create an art on the plate. Normal our dinner plate. I take a ceramic plate or whatever it is, and then I create an art. And then I take a photograph, that's all. After that, it has to be thrown out because it is with the peels and all. But this gives me a lot of satisfaction. And for each event, for each day, I make it, post it for my friends, and they all enjoy it. Like today also for the Women's Day, I have made it and it is available on my social media handle. So like this. And then what I used to do, I used to write some poems. And then I used to ask the people, kindly identify what I have made, which area it belongs. Can you tell this top left picture belongs to which area? Kedarnath. Yes. Bottom one is a lady who is going for water, bringing water with one picture on hand and one picture in the on head and one picture is on the hand. The center one is from Kashmir. So that day I wrote, बर्फ से ढकी वादियाँ, सुंदर ट्यूलिप के फूल, केसर की वो खेत जहाँ सब कुछ लगे कूल कूल, पानी पर तैरता घर है जहाँ, सेबों की लालिमा जहाँ, धरती का स्वर्ग कहलाता, बताओ भाई मैं हूँ कहाँ. So people then try to identify and they do it. It is just for fun to attract more and more people to my art form. That is Santa Claus made for Christmas, and then Saraswati made